and today we're going to discuss citizenship, India and Bangladesh. हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे बेसिकली कि बांग्लादेश का ऐसे क्रिएशन कैसे हुआ है बांग्लादेश का। तो ऐसे बंगाली की अलग से आइडेंटिटी बन गई थी 1905 के अराउंड ही ऑलरेडी। एंड बिकॉज कर्जन लॉर्ड कर्जन वांटेड टू पार्टीशन बंगाल इन 1905, वहां पे काफी ज्यादा नेशनलिज्म की स्पिरिट थी बंगाल वाले रीजन के अंदर। सो दैट इज व्हाई ही वांटेड टू डू दैट। और तो हाँ, मतलब दैट इज हाउ कम्युनल टेंशन धीरे धीरे बिल्ड करने लगी। फिर 1946 के टाइम पे देयर वाज दिस मैसिव कम्युनल राइट्स इन दैट एंटायर एरिया। तो देयर दिस कॉल्ड ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। तो वो हुई वहां पर इन कैलकाटा इन 1946, in which a lot of Hindus were killed, and retaliatory riots हुए बिहार और इन सारे एरियाज में जहाँ पर naturally a lot of Muslims were killed, and so there were a lot of communal tensions partition के time पे भी, and as we all know कि Pakistan, like it was Bangladesh was earlier East Pakistan, so yeah, East Pakistan was formed and they were part of the same country। ठीक है, वो एक ही पाकिस्तान, एक पूरी कंट्री थी जिसमें Bengalis felt कि they were not getting enough rights, and so they rose up against the Pakistani army rule। पाकिस्तान की आर्मी का जो composition था that was majority Punjabi dominated। So the somehow but the population of Bangladesh was, or the Eastern Pakistan was more than Western Pakistan। So somehow there was this guy from East Pakistan, जैसे मुजीबुर रहमान, right, जो शेख हसीना का वो है फादर है। So he got elected and he was supposed to become the prime minister of entire Pakistan, but army obviously didn't want someone from East Pakistan to and become Bengali। and a Bengali guy। Bengalis को ऐसा थोड़ा racist way में वो देखते थे। So they thought we cannot have a guy lording over us। तो उन्होंने उसको बुला लिया इस्लामाबाद, because इस्लामाबाद was the capital, but वहां पर बुला के जो है उसको कैप्टिवेट कर लिया, बोला कि ठीक है कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा। एंड फ्रॉम और फिर उसके बाद क्या हुआ कि दे वेंट इनटू फुल ब्लोन जो है सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट जो बंगाल के अंदर हो रहा था। तो वहां पे लॉट ऑफ पीपल कॉल बंगाल के अंदर जो हुआ उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले उसकी 50th एनिवर्सरी निकली है 26 मार्च के अराउंड। उसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। तो ऑपरेशन सर्च एक ही दिन जो है लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने जो है ही किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल एक साथ। एंड एज यू नो कि 10 मिलियन बंगालीज जो है मोस्ट प्राइमरीली हिंदूज, दे केम एज रेफ्यूजीज टू इंडिया एट दैट टाइम। एंड देन उसकी वजह से इंदिरा गांधी हैड टू टेक अ हार्ड कॉल एंड देन वी वेंट इनटू फुल ब्लोन वॉर एंड वी गॉट देम इंडिपेंडेंट। तो हाँ, तो बेसिकली दिसंबर के अराउंड बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस इन 1971। और अभी रिसेंटली उसकी इस साल वो उसकी 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मोदी गया था वहां पे बांग्लादेश में कोविड के बीचों बीच। तो हाँ, तो ये एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट था बेसिकली बांग्लादेश के बारे में। तो हाँ, मतलब एंड वो कोई खासा स्टेबल कंट्री नहीं रही है अभी तक। रिसेंटली उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े अच्छे हो गए हैं, but yeah। So and yeah, Anupam। Yeah, so I just wanted to ask Vyas to tell us something more about the demographic inversion that has sort of happened over the past 50-60 years since independence basically in Bangladesh, and if that context is given, then probably we can go into depth of the debate about the socio-political underpinnings of Bangladesh at this point of time. So yeah, there's just one thing that I would like to add here. The initial partition of Bengal in 1905 was itself done on religious lines, where the Muslim majority areas were converted into what is now Bangladesh, and the Hindu majority areas were kept as the part which is West Bengal. So at the start itself, the demographic was favoring the Muslims, and after independence, I think they have taken on some steps which have further increased the percentage of Muslims in their country. Yeah,
से अगर if we just go by raw figures, right? तो partition के time पे they were like the communal split between Muslims and Hindus of all Bengali speakers. So the Bengali speakers को if I keep in perspective, and if I do a communal split, then it would have been like 50-50 at that time. 50% Hindu population, 50% Muslim population. But over time, what has happened is like of all people who speak Bengali in the world right now, 80% of them are Muslims right now. And that is mostly because of the fact that there has been this genocide which happened in 1971. So Bangladesh mein post partition the population of Hindus was like 30%, but it has come down to 10% now. While in India, the population was 25%, it has only increased by 2-3%. So 27-28% is their population right now in India. Yeah. So there has been this inversion that and there is this other point, because Bangladesh का there is this issue, right? कि बांग्लादेश में सबसे पहली बार अगर कोई भी environmental disaster होता है तो 40% of that country is going to get inundated, and they are going to be the first environment related migrants, like the refugees created due to environmental disaster. So they have this thing, वहाँ पे जो छोटी मोटी इस तरह की radical organizations होती हैं, these organizations have this idea in mind, and this is also some sort of a conspiracy theory that they want to get large part of Northeast India, and this is called an idea of Greater Bangladesh. So जैसे अखंड भारत है वैसे टाइप का Greater Bangladesh. So Greater Bangladesh में they want to incorporate some areas of India's Northeast, and so yeah. So already you'll see that because of this migration या जो भी infiltration है or whatever it is, because of that the demography is shifting in a lot of areas. Just say if you look at Assam, right? So in Assam, Assam is like the second largest population of Muslims in India. It is like 36% population, and the indigenous population somehow feels threatened कि उनकी identity is going to get lost because of this. So yeah, it is a big question. Mm-hmm. And just to add, 2/3 of Bangladesh's area is less than 5 meters above sea level. So any kind of rise in sea level will result in a lot of environmental refuge. And India, most of Bangladesh's boundary is shared with India. So any kind of environmental refugees that try to leave Bangladesh will likely come into India. Only a very small part of the border is shared with Myanmar, which has troubles of its own. So this refugee problem is only going to get worse as we move into the future, and it's already a huge debate in places like Assam and West Bengal. Exactly. So because of this, all this entire about CA and RC, all these things started from Assam actually. So Assam के अंदर we like promised them that we are going to conduct during Assam Accords, and it was like one of the points. So अभी वही बात है कि now you'll have to balance out. तो अब ये CA and RC, this entire thing became a very huge cause of debate last Feb में. I think बहुत सारा riots where people were split on it. But I think if you look at it logically, or if you look at it from the perspective of Indians, I think it makes a lot of sense, and we can like discuss about it. But so that is how it started. No, so just to add on to this point is the fact that a lot of Rohingyas actually went to the NRC was one of the major factors, was Rohingyas coming into India. So now a lot of Rohingyas did get shelter in Bangladesh, but the fact of the matter that remains today is that even Bangladesh today is trying to get rid of them, right? Because of the law and order issues, there have been a lot of tensions there, and they are now trying to shift it off, to ship these people off onto a separate island called, I think it is called Basham Char Island, which is really, which can go submerge anytime, right? So now you did take in a lot of people, but you could not provide for it. You suffered because of it, and now you're throwing them away anyways to die, right? So what was the point of all this facade anyways? Now, when a country like India is taking a rational call that at this point of time, we are already overburdened with close to 140, 150 crores population, and we can't take any extra population. The
unofficial numbers of the immigrants or the illegal immigrants in India is somewhere between 3 to 4 crores, right? So that number is not small, right? It's close to 3 to 4%, right? So if you are getting to increase your population by 3 to 4%, right, and that too the kind of people who are unemployed, who are not very well Low human educated, capital. low human capital, why would you want to do that, right? Because these people will, and it is not about dehumidifying people from Bangladesh. I can say for certainty that there will be a lot of smart people in Bangladesh, but the people, and so many smart people in the Rohingya community, but the people that we will be getting will not be the best of the lot, right? And since it will not be the best of the lot, we'll have to face the burden of probably the worst aspects of that particular society, right? Just as, like you were saying, America would not be ready to take the worst of the Indians, right? They will be ready to take only the IITs. Why is that so? Because they know that they can A, fend themselves, B, they can provide good amount of tax to the people, to the government, right? And 3, there will be no law and order issues, and they can throw them out anytime they want, right? Until they give them the citizenship and everything. So it makes extremely sense from internal security perspective to know where each and every Indian is and identify at what place that person is, Indian or whatever outside. So to have a register makes absolute perfect sense. Whether or not that has some communal angle or not, that is a debatable issue. But the fact that we need a national register of citizens is a logical point which everyone should conquer, right? That is the first and foremost thing that we should agree on. And the second point that I was making was that when you are trying to create a situation for people to come inside your country, when you already have 150 odd crore people, it's not a conducive thing, especially when these people are the worst of the lot of the type of people that we are expecting. It makes sense for India to take that decision. Yeah. Plus, in this entire debate, we'll have to like distinguish between the people who are migrating because of economic reasons and people who are coming here because of some sort of religious persecution. So you cannot, you cannot treat both of these population groups in the similar manner. So there is population for people who are coming from most of these Muslim countries who are just like, even if you look at like Bangladesh. So Bangladesh is like on paper secular, but they also have this state. They have also declared their state religion as Islam, right? And Pakistan anyway is an Islamic state. So these countries they have this very discriminatory way of looking at their minority population. And there was this report in the Parliament of Pakistan in which they one of their Hindu member he quoted that about 5 lakh people are 5 lakh Hindus actually migrate to India every year from Pakistan as refugees. So there is this massive number of people who are coming to India because of religious persecution, and over there you'll have to somehow create some sort of discrimination between people who are coming here for economic reasons and people who are coming here for because of religious persecution, right? So that is what people are trying to do actually. Yeah, and India actually lacks that distinction because in India, according to the law, a refugee and somebody who is an illegal immigrant are treated in the same way. They're both treated as foreigners. So we need some sort of law to deal with refugees who come to India. Because until now, the Indian policy towards refugees has been driven by ad hocism. So whatever seems to be of political, beneficial politically is the decision taken. And there is no law which can define the policy. So having CAA and NRC is a step in the right direction because we don't have to depend on ad hocism to make decisions on refugees. We have a set procedure and we follow that. So from that perspective, it is definitely useful. Yeah. Plus, I don't understand even the UN Convention on Refugees as well. Exactly. Yeah.
मतलब ये वाला पर्सपेक्टिव भी मुझे काफी बार समझ नहीं आता कि यू हैव टू सी इट फ्रॉम द लेंस ऑफ पार्टीशन. अगर हम पार्टीशन के बारे में बात ही कर रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पार्टीशन किस इंटेंट से हुआ था. एंड पार्टीशन हैपेंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. And the idea was that Muslims of Indian subcontinent who think that they cannot live with other people, including Hindus, they said कि नहीं, we are going to have our own Muslim majority country. Other people said कि ठीक है, we are going to create a secular country, right? So these are people who went there, and their ancestors who went there with an intent that we don't want to live with this other lot. तो अब अगर वो वापस हमारी कंट्रीज के अंदर आ रहे हैं for whatever reasons, why should we even invite them, or why should we even entertain them? And the other point is that you'll have to see that the non-Muslim population of Indian subcontinent, where else will they go, right? So I just Which want other to add country is this. going to become the Sorry, Yeah. sorry to interject, Ishan. I just wanted to add why this point that you are making is extremely crucial for anyone who is listening to us. Is because the idea that we are saying that the country India was for all the secular people and for all the Muslim people who wanted a separate identity, separate country of their own, was the idea of Pakistan, right? So the partition happened so quickly that a lot of people on either side of the border did not get a chance to make a rational decision about where they want to stay, right? A lot of people, masses, were uneducated, they were unaware कि मुझे कहाँ रहना, मुझे एक सेक्युलर कंट्री में रहना है, मुझे एक इस्लामिक रिपब्लिक में रहना है, मुझे कहाँ रहना है, राइट? और अगर उनको पता भी था कि मुझे यहाँ रहना है, तो उनके पास शायद वेयरविथॉल्स नहीं थे कि उसको एग्जीक्यूट कर पाए, राइट? तो इसलिए बहुत सारे हिंदू, इसलिए जो एनआरसी का जो डिबेट है जहाँ पे वो रिलीजन वाला एंगल आता है, तो इसी लॉजिक से आता है कि बहुत सारे हिंदूज जो थे वो पाकिस्तान की साइड में रह गए थे, वो इंडिया में आना चाहते थे, लेकिन उनके पास शायद पैसे नहीं थे, वेयरविथॉल नहीं थी, इतनी जमीन जायदाद वहां पे थी कि वो नहीं आ पाए. तो उनके लिए क्या इंतजाम हो सकता है, क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके अराउंड डिबेट रिवॉल्व करना चाहिए. एक और पॉइंट इसके अंदर यह है कि अनलाइक मुस्लिम्स, बिकॉज इंडिया के अंदर उस टाइम पे देयर वर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, राइट? तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अंदर हिंदूज एंड एवरीवन एल्स, वो सब तो एक जनरल इलेक्टोरेट को, मतलब जनरल लोगों को वोट कर रहे होते थे. एंड मुस्लिम्स हैड सेपरेट इलेक्टोरेट, लाइक सो मुस्लिम्स यूज्ड टू वोट फॉर मुस्लिम्स, राइट? तो मुस्लिम्स वर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड कि वेदर नॉट दे वांट टू हैव अ सेपरेट कंट्री. But the minority Hindu population in Sindh and Punjab and in Bengal, they were never even given this option, right? उनको तो पूछा ही नहीं कभी किसी ने कि तुम्हें क्या करना है. Do you want to create your own Hindustan within this Muslim majority area? That's an option, right? But they were never even asked. तो जितने लोग यहाँ पे migrate करके आ गए, they came here because they got butchered and everything. But apart from that, जो लोग वहाँ पर रह गए, they are constantly feeling this thing, kidnappings हो रही हैं, they get kidnapped, forced conversions, and couple of other things are happening. So if these people now, if they want to come here, and people who have already come, so CA was for people who are already in India. उसकी cut off line, it has a cut off line, right? 2014. तो ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर परेशान हो रहा है, उसके पास he has no other place to go in the world. So what we did was we are enabling them to get this citizenship in little bit faster than people who are going to get it through a natural route. So India in a way is not barring people from any religion to come to this country and become a refugee. We are not doing that. What we are saying is कि ये कुछ लोग हैं जो कि religiously persecute होके इस देश में आए हैं. So we are going to make it easier for them to get citizenship. That is the only thing that happened. But ये बहुत बड़ा issue बन गया, and the fact that it became a very big issue tells you a lot about the way a lot of communities in India think about society. So basically about India या फिर हमारी neighboring countries के अंदर minorities का जो treatment है. So if they were, अगर उनका कोई भी humanitarian point of view होता तो they would have never opposed CAA. But the fact that they opposed it tells a lot about their fears, but also a lot about how they view a society, maybe when they are in majority. So yeah. So I just wanted to add one
other factual point here is the fact about the Nehru-Liaquat Pact that happened, I think around 1950 or 60, somewhere around that, which also is, on this context, said that the Hindus in Pakistan will be taken care of, and Nehru promised that the Muslims in the Indian side of the border will be taken care of. But the fact that it did not happen, the secular sort of values of the Pakistan constitution that was sort of there when Liaquat was there was overturned when it became a harsh Islamic republic, right? Later on in the 80s, after the coup and all. So, in that context, also, it becomes imperative of the Indian government to take a call of a legal ground कि अगर लीगली ये चीज पूरी नहीं हो पाई है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि मैंने लीगली वादा किया था उन लोगों के साथ कि ये चीज मैं एग्जीक्यूट करूंगा और वो नहीं हुई है, तो मैं उसके लिए ये एक मेथड बना रहा हूँ कि 2014 तक जो लोग आ चुके हैं उनके लिए मैं आसान कर दूंगा सिटीजनशिप पाना, और ये 2014 के बाद नहीं, लाइक सच। हाँ Yeah. And also bear in mind कि अगर हम इसके अंदर we don't put a religious restriction कि इसमें non-Muslim religions हैं, सिर्फ उन्हीं को हम ये दे रहे हैं, तो that will invite a lot more Muslim refugees to come to India because conditions here are better if you compare like some of the Islamic countries which are dysfunctional states. So if we start giving away citizenships to anybody who comes here, then we'll be inviting a lot more of these people, and we are already, as Anupam mentioned, stressed with very high population. So we literally have no more space to invite more people in, and all these religions, they like all these countries where these people are coming in from, they are Muslim majority countries. So why should we take on the burden of accommodating these Muslims when the country they are coming from is in itself a Muslim majority country? Yeah, exactly. So बस इसमें जो एक बहुत ही फ्लॉड से एक आर्गुमेंट निकल के आता है कहीं से, वो ये कि एनआरसी और सीए को कंबाइन करके पीपल आर गोइंग टू थ्रो इंडियन मुस्लिम्स आउट ऑफ दिस कंट्री समहाउ, ठीक है? ज्यादा फ्लॉड आर्गुमेंट नहीं देखा। कोई इंसान अगर एनआरसी में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि just because that person happens to be a Hindu, so he'll get the citizenship back, ठीक है? And if a Muslim guy gets disqualified because of this, he won't be able to get his name registered in NRC, ठीक है? इससे ज्यादा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट नहीं देखा मैंने। तो इसमें बहुत ही सिंपल से बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट मैंने एक जगह पढ़ा था कि लेट्स से मैं तमिलियन हूँ, लाइक आई एम अ तमिल हिंदू, एंड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एनआरसी हो गया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे एनआरसी में, राइट? तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम निकलो यहाँ से इस कंट्री से, एंड तो मैं जाके बोलूंगा कि नहीं, मैं तो असल में पंजाबी हूँ, मैं तो मेरे एंसेस्टर तो पंजाब से आए हैं, पिछले 10 साल पहले ही हम लोग रेफ्यूजी बन के आए थे, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स, अब मुझे तुम सीए से सिटीजनशिप दे दो और मुझे एनआरसी से बाहर मत निकालो, राइट? तो ये वाला पॉइंट है इनका, तो which is impossible यार. How can a Tamilian even claim कि यार he is 7 generations were living in Pakistan, and there is this entire elaborate process of refugees का जब when they come to India उनका registration होता है, there are a lot of things which happen. Without that kind of a documentation, you are also not going to get citizenship through CAA. वो भी बहुत ज़्यादा rigorous process होगा, right? Plus there is also this fear that spy वाला भी fear हमेशा होता ही है, right? Pakistani Hindu refugees acting as a spy for Pakistani agencies and things like that. So there is that fear as well. So that process is going to be very rigorous. वो उसमें जिस तरह की स्क्रूटनी होगी वो बहुत टफ होगा. It is going to be tougher than NRC. So ये वाला argument तो एकदम flawed है actually. I think there were a lot of government papers that talked about intelligence inputs being taken, so to verify whether or not that particular person deserves to be to get certified as an illegal immigrant who should be given citizenship. But I think let's just keep all the facade aside. The idea of the CA and RC bill, I think, in my opinion, is very, very simple. Is to
put fears in the head of all the future illegal immigrants coming from Bangladesh, from anywhere in the world, right? It is because कि अगर मैं किसी को बांग्लादेशी को फॉर एग्जाम्पल मैंने पकड़ भी लिया, ठीक है, मैंने पता कर लिया कि भाई ये है लौंडा, ये इलीगल इमिग्रेंट है, तो क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ? क्योंकि मैं जब उस इलीगल इमिग्रेंट को लेके बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास जाऊंगा कि भाई देखो तुम्हारा लड़का है, ये आ गया था चुपके से, इसको पकड़ लो, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, ये तुम्हारा लड़का था ही नहीं, आपको प्रूफ क्या है कि हमारा लड़का है, ठीक है? तो अब इंडिया से आगे बोलेंगे हाँ यार बात तो सही है कि तुम वहां का तो आधार कार्ड लेके तो आया नहीं था वो जेब में रख के, ठीक है, भाई मेरे पास बांग्लादेश वाला आधार कार्ड है, हमको रख लो, तो वो कभी नहीं होने वाला। तो इसमें प्रैक्टिकल एंड सोल्यूशन इसमें ये नहीं है कि सरकार उन इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ के जेल में रख, जैसे वो आसाम में कुछ फोटो पब्लिश हो रही थी कि यार यहाँ पे बहुत बड़ा सा तहखाना बनाया है, यहाँ पे सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा है, तो सरकार पागल है क्या जो 5 करोड़ लोगों को पकड़ के जीवन भर खाना खिलाएगी? पागल है सरकार? नहीं, मतलब उससे तो बेवकूफ कुछ हो नहीं सकता। तो माय पॉइंट इज कि ना सरकार उसको खाना खिला सकती है, ना सरकार उसको निकाल सकती है, ठीक है? अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट ये सुन रहा है, which I don't think so सुन रहा है, उसको रजिस्टर हो जाना चाहिए, उसको नहीं निकाला जा सकता, ठीक है? तुम्हें नहीं निकाला जा सकता ब्रो, तुम सेफ हो, तुम घुस चुके हो, ठीक है? यू आर इन अ सेफ हैबिट, ठीक? लेकिन अब फ्यूचर में कोई इमिग्रेंट आ रहा है, उसके दिमाग में ये डर भी बैठना जरूरी है कि कुछ तो हो रहा है इंडिया में, कुछ तो हो रहा है, वो पकड़ के ले जाते हैं, कुछ तो डॉक्यूमेंट के ऊपर ढूंढ लेते हैं और फिर ले लेते हैं, तो ये डर होना चाहिए। तो इनफैक्ट इफ यू लुक एट द रीजनल टेलीविजन ऑफ बांग्लादेश एट दैट पॉइंट, बीबीसी बांग्ला, अगर तुम देखोगे 1-2 वीडियोस है, उसमें देखा कि भाई जिस दिन सीएनआरसी वो रिलीज हुआ कि होने वाला है, उसमें नाव के नाव भर के भाई लोग वापस जा रहे हैं कि भाई वापस चलो भाई, इंडिया में तो आप पकड़ लेंगे, ये आपको पकड़ लेंगे। तो ये तो दैट इज द फियर ऑफ गॉड, यू नो, दैट हैज टू बी इंस्टिल्ड कि and you know external relations I always say has to be based on self interest, national interest, right? और ये नेशनल इंटरेस्ट हमारा यही है कि कोई भी ऐसे फालतू आदमी बिना हमसे पूछे नहीं आ सकता, ठीक है? भले ही हमारी सिचुएशन अभी नहीं है कि हम उनको पकड़ के वापस कर लेंगे, लेकिन हम ये जरूर एहसास दिला देंगे कि तुम घुस गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? और ये सबसे बड़ा पॉइंट है सीएनआरसी का, और ये मोदी और अमित शाह सामने आके नहीं बोल सकते भाई, ठीक है? क्योंकि अगर ये बोल देंगे तो फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा ना। तो बात ये, इसमें क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि पंजाबी तमिलियन वो सब छोड़ दो भाई, वो सब कुछ नहीं है, वो सब तो नहीं होने वाला, बट मेन लॉजिक ये है कि डर बैठा है और डर आ रहा है और ये डर आ जाएगा, और हमारे जैसे लोग इस चीज को ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करेंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, ज्यादा आ रहा था यार कि 8 नंबर में रेफ्यूजीज वापस लौट रहे थे, जा रहे थे अपने बांग्लादेश में फिर से, और बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड ने भी एकदम जो है उनको भी ऐसे कोई डेटरेंट मिल गया अल्टीमेटली, यू नो, दिस लॉ इज मोस्टली फॉर अ डेटरेंट, और तो हाँ अल्टीमेटली दिस इज द थिंग। और वैसे बेसिकली वो केजेस वाला कंसंट्रेशन कैंप्स बन गए थे प्रॉपर, तो कंसंट्रेशन कैंप्स वाले कंसंट्रेशन कैंप्स वाले नहीं भाई, सरकार के पास जेल बनाने के पैसे नहीं है भाई, जेल नहीं बन पा रहे लोग, प्रिजनर टू वो जेल रेशियो देखोगे तो इंडिया का वर्स्ट है, मतलब कैसे कैसे लोग सर। और अरे प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट थे यार, जो भी रहे हो, बट कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं, और मतलब अगर हो भी सकता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना रहे हो, बट वो सिर्फ डराने के लिए हो कि हाँ चलो कैंप भी बन रहा है, अब तो तुम लोग बचोगे, आओ तो कैंप में डालेंगे, तो वही रहा हूँ। तो मतलब इन अ वे जो ये लेटियंस मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, दैट वाज इन आवर फेवर एक्चुअली, अल्टीमेटली उन्होंने ज्यादा फियर क्रिएट कर दिया, बहुत बढ़िया, व्हिच इज गुड, हाँ। एंड ऑन दिस नोट, लेटियंस मीडिया वाले में कैन समवन गेस कि मैंने ये वाली शर्ट क्यों पहनी हुई है अभी? yes obviously, that's very obvious, बता ही दो। an ode to अनुभव, मेरे को शायद पता हो, obviously an ode to Nilesh Mishra's ex-wife Nidhi Razdan. Oh, now I remember. दीदी बोल रही थी कि उसने एनडीटीवी से जॉब छोड़ दिया और बोला कि मुझे हार्वर्ड में प्रोफेसरशिप मिल गई है, और 1 साल तक शी वाज इनटू दिस कि मैं हार्वर्ड जा रही हूँ, हर जगह बोल रही है मैं हार्वर्ड प्रोफेसर हूँ, आर्टिकल्स में लिख रही है हार्वर्ड प्रोफेसर हूँ, सब कुछ लिख रही है। यूएस कार्नेगी की डिबेट में आ गई भाई, कार्नेगी की डिबेट में आना बहुत मुश्किल होता है,
कोई भी कार्नेगी की डिबेट्स, कार्नेगी इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो डिबेट्स कराते हैं, हाँ उसके डिबेट्स हाँ में आ रही थी भाई। भाई आना बहुत मुश्किल है, किसी को लेके नहीं आया वगैरह इंडियन को तो। और फिर वो मिलन वैष्णव के साथ आई थी। वैष्णव भी हाँ ऐसा कोई खास इंसान। बट एटलीस्ट यूएस की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो रहा, मतलब ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो रहा है, ऐसे फेक हम्म, बातें तो नहीं कर रहा मैं। हाँ हाँ। चलो चलो, ठीक है फिर। चलो आई फिर थिंक इट इज अ रैप।